हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम डॉक्टर सोनल परिहार। मैं आपकी अन अकेडमी की ओबीजी ट्यूटर यानी कि ऑब्स एंड गायनी ट्यूटर। ऑल राइट गाइस, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आज आपको प्यूबर्टी यानी कि हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ाने वाली हूँ, राइट? सो आई एम जस्ट चेकिंग कि आई हैव स्टार्टेड। कैन समबडी हु इज watching me can actually tell me that I am live? Can you tell me please, children, that I am live, that you can see me, you can hear me? दो सीरीज खत्म कर ली। अब हमारी सीरीज शुरू होगी हॉर्मोन्स की। प्यूबर्टी, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल, सारे हॉर्मोन्स कैसे कैसे HPO एक्सिस पे ये एक्ट करते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या एबनॉर्मेलिटी होती है, GnRH, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, सबका रोल क्या है, और साथ में इसकी बाइंडिंग हॉर्मोन्स क्या है, आपस के इंटरेक्शंस क्या है, हाफ लाइफ क्या है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। ठीक है। Then we will study about the menstrual cycle, the most important part of a woman's body, gynecology. तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि मैं हूं डॉक्टर सोनल परिहार। मैं एक यूट्यूबर हूं, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट कंसल्टेंट हूं। मेरे खुद का हॉस्पिटल है जोधपुर में, राजस्थान में। इट्स अ प्राइवेट हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी, और मैं वहाँ 22 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरे को 22-23 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। एंडोस्कोपिक सर्जन, ट्रेन कॉल्पोस्कोपिस्ट, मुझे एंडोस्कोपी बहुत पसंद है। आई एम एन इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट। अच्छा, साथ में मैं एक गायनेकोलॉजी ट्यूटर हूँ। क्यों ट्यूटर हूँ? क्योंकि मैंने आयुर्वेदिक कॉलेज में पढ़ाया है। काफ़ी सारे मेरे लेक्चर्स जो है ऑलरेडी उस पर आ चुके हैं, यूट्यूब पे आ चुके हैं। मेरे 2 चैनल्स हैं। एक तो मेन चैनल जो है वो आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट है, विच इज़ द बिगेस्ट चैनल, जो कि 11-12 लाख इसमें फॉलोअर्स हैं। बाकी एक चैनल आप जैसे बच्चों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए, विच इज़ डॉक्टर सोनल्स ट्यूटोरियल्स। उसको आप सर्च करिएगा, उसमें काफ़ी ट्यूटोरियल्स हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स है। आयुर्वेद कॉलेज में भी पढ़ाया था, वो भी अपलोडेड है। बाकी मैं कुछ कुछ टॉपिक्स पे बनाती रहती हूँ, तो अगर आपका कुछ मिस हो गया तो आप वहाँ जाके सुन सकते हैं। ठीक है। देन मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस काफ़ी लंबा है, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से पढ़ा रही हूँ। फिर आते हैं बच्चों इस स्लाइड पे, ये है नीट PG का फ्री टेस्ट कैलेंडर, जो कि ओवर हो चुका है। इस तरह के टेस्ट आते रहेंगे। ये आप देख सकते हैं 13 मार्च से 19 मार्च तक था। और इस तरह से अन अकेडमी, जो कि बेस्ट ऑनलाइन टीचिंग ऐप है, ये आपको डेली कुछ ना कुछ या एवरी वीक कुछ ना कुछ अपडेट्स देते रहेंगे। एक चीज़ और बता दूं, कल यानी कि 27 तारीख को सुबह 9 बजे एक ग्रैंड MCQ टेस्ट है, जिसमें आपको एक बिल्कुल नीट PG की तरह एक पेपर मिलेगा, जिसकी बहुत अच्छे MCQs है। सारे ट्यूटर्स ने खूब मेहनत करके उसको बनाया है, और आपको अपना लेवल पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है। इट विल बी अ मॉक टेस्ट जस्ट लाइक नीट PG, तो उसको जरूर अवेल करिए कल सुबह 9 बजे। अगर आपको कॉल करना है तो हेल्पलाइन नंबर है 85 वेरी सिंपल। 85 को 5 बार लिख दो, दैट इज 10 डिजिट्स का हेल्पलाइन नंबर। कॉल करो, पूछो कैसे रजिस्टर करना है। ठीक है। फिर आते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन। 2 तरह के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं यहाँ पर अन अकेडमी में। प्लस में आपको सारा मटेरियल ये सारे ट्यूटर्स पढ़ा रहे हैं, आपको सारा मटेरियल मिलेगा, आपको सारी क्लासेस, सारे MCQs, वही जो हर सब्सक्रिप्शन में होता है। आपको पे करना है। अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे, जो कि डॉक्टर सोनल मैंने बताया, तो इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। सो बच्चों, प्लस सब्सक्रिप्शन आपके लिए 2 महीने के लिए अवेलेबल है, जिसमें कि मैं और बाकी सारे ट्यूटर्स आपको मैराथन रिवीजन कराने वाले हैं। तो अगर आप इसको लेते हो तो ये 23 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, और अभी 1 अप्रैल से मेरे बैचेस शुरू हो जाएंगे, जिसमें हम रोज 2-2, 4-4 घंटे पढ़ेंगे और सारे सेलियंट टॉपिक्स को पढ़ के खत्म करेंगे। फटाफट फटाफट, जैसे आप रिवाइज करते हो, आपसे खुद नहीं हो रहा, आप हमारे साथ करो। हम आपको फटाफट मेन पॉइंट्स बताएंगे, और उसी से रिलेटेड MCQs भी कराएंगे 2-4 दिन बाद। ठीक है। तो उससे क्या होगा, सारे ट्यूटर्स मिलकर आपको रिवीजन करा देंगे। आपका 21 मई तक पूरा सब कुछ टिप्स पे आ जाएगा। ठीक है। तो आपको लगेगा एग्जाम में आपके साथ अन अकेडमी के ट्यूटर्स भी बैठे हैं। ठीक है। फिर आते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इसमें भी बच्चों मेरा कोड यूज करना है तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। आइकॉनिक 2 महीने के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप प्री पैडलर भी पढ़ें, अन अकेडमी भी पढ़ें। तो अगर आपको ऐसा है कि प्री पैडलर भी मुझे लेना ही है, तो फिर बेटर है कि आप प्री पैडलर अलग से ना लें, आप इसको अन अकेडमी के साथ ले लें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, क्योंकि आपको दोनों का मटेरियल एकदम क्लियर मिल जाएगा, सारे MCQs मिल जाएंगे। ये सारे टेस्ट, ये सारी जो मटेरियल है, आप कभी भी कहीं भी बैठ के देख सकते हैं, अपने मोबाइल पे, कहीं भी, किसी भी तरह का मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, एनीथिंग। ठीक है। और जो भी हम लाइव पढ़ाते हैं वो सब वहाँ रहता है, अवेलेबल रहता है। तो आपको ऐसा नहीं कि मेरी लाइव क्लास मिस होगी तो वो मिस ही हो जाएगा। दैट विल बी देयर, यू कैन ऑलवेज गो एंड सी दैट। ठीक है। नाउ कॉन्ग्रेचुलेशन टू दीज टॉपर्स जो FMGE बैच के थे, जिन्होंने कि लास्ट ईयर टॉप किया है।
क्योंकि FMGE को भी हम कवर करते हैं, हम सारे एग्जाम्स को कवर करते हैं, INICT को, हम नीट PG को, तो वी कवर एवरी सब्जेक्ट एंड उसी के बेसिस पे हम आपको MCQs देते हैं, ठीक है। अब आते हैं स्पेशल क्लास के जो फीचर्स हैं। स्पेशल क्लास मेरी रहती है इवनिंग में, मैं डेली ले रही हूँ, कभी 2 क्लासेस, कभी 1 क्लास, कभी 5 बजे, कभी 5:30, कभी 7:30, तो बिटवीन 5 to 8 आपको मेरी क्लासेस मिलेंगी और एवरी डे डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक एंड माई शेड्यूल मैं उसको शेड्यूल करती रहती हूँ। तो अनअकैडमी के ऐप पे आप जाके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि मैं किस तरह से क्लासेस और कैसे कैसे उसको बना रही हूँ शेड्यूल को। तो उसमें क्या आप इंटरेक्ट कर सकते हैं मेरे से। मैं पॉलिंग सेशंस रखती हूँ, क्योंकि मैं जब क्वेश्चंस पूछती हूँ तो उसमें नीचे पॉल्स आते हैं, तो यू कैन ऑलवेज सेलेक्ट आपका आंसर, और उसमें एक लीडरशिप बोर्ड भी आता है, सो वी कैन टेल कि किसने सबसे ज़्यादा सही आंसर्स दिए। देन यू कैन रेज अ हैंड, यू कैन टॉक टू मी इन ऑडियो। देन अगर आपको कोई क्लास मिस नहीं करनी तो आप बेल बटन दबा दो, जैसे यूट्यूब पे होता है। लेक्चर के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, एंड एनी टाइम एनीवेयर। एज आई टोल्ड यू, मिस हो गया कोई बात नहीं, ठीक है। नाउ लेट मी जस्ट चेक अगर इसमें कोई चैटिंग है क्या। नहीं, चैट ऑप्शन नहीं है इसमें अभी फिलहाल। राइट, सो दैट्स इट। तो ये हो गया। अच्छा, ये जो स्लाइड है ये आपको बता रही है नीट PG 2022 की जो मैराथन बैच है, जो कि मैंने बताया ना 23 मार्च से शुरू हो चुका है, और इसमें आपको दिख रहा है सारे ट्यूटर्स आपके साथ दौड़ रहे हैं। इतने सारे ट्यूटर्स हैं, आपको हर सब्जेक्ट में एक एक दो दो ट्यूटर, कभी कभी 3 ट्यूटर्स में मिलेंगे। तो आपको जरूरी नहीं कि एक ही ट्यूटर से पूरा पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है। यू कैन चूज योर सब्जेक्ट, यू कैन चूज योर टॉपिक, यू कैन चूज योर ट्यूटर, ठीक है। अब ये 23 मई से स्टार्ट हो चुका है बच्चों, इसको 2 महीने के लिए सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वो सारे टेस्ट सीरीज मिलेंगी जिसकी मैं बात कर रही हूँ, है ना। ये अभी स्टार्ट हो चुका है, तो इसके लिए आपको MCQ क्विजेज मिलेंगे, आपको इंटरेक्टिव लेसन्स मिलेंगे, आप अपने टॉपिक्स बोल सकते हो हमको ये पढ़ना है, तो यू कैन ऑलवेज टॉक टू योर ट्यूटर्स। आपको PDF नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, एंड ऑफकोर्स खूब बढ़िया क्वेश्चन बैंक मिलेगा, क्योंकि अभी यही काम करना है, क्वेश्चन बैंक्स ही सॉल्व करने हैं, उसके बेसिस पे थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। अब आते हैं FMG 2022 बैच। इनके लिए भी 23 मार्च से 23 मई 2022 तक 2 महीने का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। सारे ट्यूटर्स लाइन से, आपके सारे फेवरेट ट्यूटर्स, द ग्रेट ट्यूटर्स आर देयर एंड दे आर डूइंग देयर बेस्ट टू मेक द सब्जेक्ट ईजी फॉर यू, जिससे आपको सब एकदम ईजी केक लगे, ठीक है। ये सब फैसिलिटीज हमारे लिए अवेलेबल नहीं थी जब हम पढ़ रहे थे, बट बच्चों यू आर वेरी लकी। तो जब ट्यूटर्स और अनअकैडमी की टीम इतनी मेहनत कर रही है तो आपको उसको यूज करना चाहिए, और कोई महंगा नहीं है। इट्स अ वेरी नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी लेटेस्ट जो रेट्स है ये 7650 है 2 मंथ्स का। इसमें अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, और बाकी मैंने बताया था आप 85 को अगर 10 टाइम्स लिखे, 5 टाइम्स लिखेंगे, सो दैट विल बी द डिजिट, that will be the helpline number. It's difficult to write with this, so I'm just trying to write it with the pen tab. Okay, for people who are watching me for the first time, I'm your gynecology tutor, और मैं आपको हेल्प करूंगी इसको पास करने में, ठीक है। 85, 85, 85 and 85. So that's it. That is it. That is 8. Okay. So that's the helpline number, and this is 5. This is not 3. Okay. Sorry for the writing. So 85, 85, 85, 85, 85. That's the helpline number. All right. So आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम फटाफट ये करेंगे कि हमको प्यूबर्टी के बारे में, हॉर्मोन्स के बारे में क्या समझ में आता है, ठीक है। Let us see. लेट मी चेक कि इसमें लाइव चैट अवेलेबल है। डेफिनेटली अवेलेबल है। ऑलराइट बच्चों, तो हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? दैट इज प्यूबर्टी। ओके, दैट्स अ फीमेल जिसके कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से हॉर्मोन्स निकले, और उसके बाद ये गए सीधे ओवरी में पिट्यूटरी से जो हार्मोन निकला उसने ओवरी को स्टिमुलेट किया, बीच में थोड़ा सा एड्रिनल ग्लैंड का भी स्टिमुलस आया, बीच में थायराइड ग्लैंड का भी स्टिमुलस आया। सो बेसिकली दिस इज व्हाट दे आर शोइंग, दैट दिस इज हाउ द एंटायर प्यूबर्टल चेंजेस अकर, और कैसे बच्चे के अंदर माँ के हार्मोन्स, मदर के हार्मोन्स जाके इंटरेक्ट करते हैं, कैसे जब बच्चा पैदा होता है उसके अंदर ईस्ट्रोजन का इफेक्ट होता है, थोड़े दिनों के बाद ईस्ट्रोजन निकल जाता है, और उसके बाद प्यूबर्टी के बाद वापस से वो HPO एक्सिस मैच्योर होना शुरू होता है, क्योंकि नेगेटिव इनहिबिशंस हट जाते हैं जो इधर उधर हार्मोन्स के थे, एंड देन इट स्टार्ट्स वर्किंग। दैट इज हाउ प्यूबर्टी अकर्स, ठीक है। तो प्यूबर्टी कैसे होती है? इट इज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। सॉरी फॉर दिस, आई विल जस्ट इरेज दिस। Okay, so what is happening? Right,
right, so it is a period of gradual transition. It's a gradual thing. It does not happen in a day or two कि बस आज ऐसे थे और कल प्यूबर्टी हो गई. No, it's a gradual transition from childhood to adulthood. सब कुछ gradually होता है. थैलार के और एड्रिनार के यानी कि प्यूबिक हेयर आते हैं एंड ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू होता है. जो गोनाडल ऑर्गन्स हैं, गोनाडार के होता है, सब बड़े होने शुरू हो जाते हैं. और बाद में मिनार की यानी कि ऑनसेट ऑफ मेंसेस. ऑनसेट ऑफ मेंसेस के लिए आप डेट डाल सकते हैं कि हाँ कि भाई इस डेट पे इसको पीरियड शुरू हो गया. तो दैट कैन बी डेटेड, बट this cannot be dated. You gradual transition that cannot be dated. So it's averagely starting from around 8 to 9 years and finished at about 13 years. ठीक है? It is a process of biological, psychological and physical development. Okay? Through which the sexual reproduction becomes possible. So puberty का मतलब यही है कि sexual reproduction हो पाए. ठीक है? Quickly इसको रिवाइज करेंगे. बाकी डिटेल्स हम शाम को पढ़ेंगे स्पेशल क्लास में. 2 स्पेशल क्लासेस है इवनिंग में. एक 6 बजे है, एक 7:30 बजे. उसको अवेल करिए, उसको सुनिए क्योंकि हम सारे MCQs भी आज ही करने वाले हैं. ठीक है? नाउ यू कैन सी ब्रेस्ट में टैनर स्टेज 1 2 3 4 5 है. 5 स्टेजेस हैं. आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड नो with this diagram you'll be able to make out कि Tanner stage 1 2 3 4 5 क्या है. ठीक है? So you can see 1 is prepubertal and Tanner 2 is breast bud, then Tanner 3 में breast elevation start हो गया. Tanner 4 and 5 is adult. ये 4 and 5 जो है adult जैसा लगता है. तो अगर आप मोटा मोटा देखें तो B1 that is B1 से B3 that is Tanner 1 to Tanner 3 is very childhood वाला breast and Tanner 4 to Tanner 5 is the adult size. ठीक है? Prepubertal is the T1 or the B1, only papilla is elevated. B2 में thalar के buds are palpable. B3 में further enlargement but there is no separation between breast and areola. So proper जो contour है that is the B4 and B5 mature adult breast जिसमें कि nipple और areola का अलग अलग contour दिखता है and एडल्ट में रिसेशन ऑफ द एरियोला थोड़ा छोटा हो जाता है और निपल थोड़ा बड़ा हो जाता है एंड ब्रेस्ट के अंदर डक्ट्स बननी शुरू हो जाती है. ब्रेस्ट पूरा राउंडेड हो जाता है. ठीक है? ऑलराइट. नाउ next coming to the Tanner stages for the pubic hair that is adrenarche. Okay, so इसको P से बोलते हैं. This is pubic hair और B क्योंकि breast है हालांकि staging तो Tanner ही है but उसको B1 B से B5 बोलते हैं. इसको T1 से इसको P1 से P5 बोलते हैं. They don't use T for this because Tanner is the staging but because it is pubic hair so we use P here. So P1 to P5 क्या है? P1 you can see is prepubertal, nothing, no hair at all. Then P2 is presexual when they have just started minimal hair that is long, slightly curved, pigmented. That's the hair that is long, slightly curved, pigmented hair is coming and it is sparse over the labia. T3 is the sexual hair which is actually the dark and coarser curly hair. So when it becomes dark, coarse and curly that is the sexual hair. It comes on the mons as well. यहाँ पर भी आ गया. P4 and P5 as you know is the adult one that is pre-adult is thick dark curly hair just short of the inverted triangle. अभी थोड़ा सा inverted triangle कम बना है और जो proper inverted triangle बनता है that is the stage 5. Okay. Now axillary hair adrenarche that is 3 stages A1 A2 A3. So it is B1 to B5 P1 to P5 and A1 to A3. इसके सिर्फ 3 stages होते हैं. Okay, so you can see now what is written here. It is the Wulfsdorf. So you can probably just remember this name कि Wulfsdorf क्या होता है. That is the name used for the axillary hair. Okay, so let me just mark it for you. That is Wulfsdorf. Okay, Wulfsdorf is the name given to the axillary hair. So it is not Tanner. Tanner is for breast and pubic hair. For axilla it is Wulfsdorf staging and it is only 3 staging. Okay. Now coming to gonadarche. Vulva may be under the estrogen influence, skin becomes keratinized, resistant to infection and the fat deposits in the labia majora and the mons. Okay, vulva में under the estrogen influence हम पढ़ चुके हैं anatomy में कि estrogen की वजह से sebaceous glands आते हैं, estrogen की वजह से keratinization होता है so that it becomes resistant to infection. Keratin is nothing but the dead stratified squamous epithelium जो कि ऊपर उसके ऊपर एक layer बनाती है and it becomes impermeable to the water and other dirty and environment. It just saves the skin from the external environment. ठीक है? Now it deposits in the labia majora and of course the mons. Vaginal mucosa में multi-layer हो जाता है because estrogen आ गया है तो multi-layer stratified हो जाता है. Glycogen आ जाता है that is broken down by the lactobacilli into lactic acid तो acidic pH आ जाता है. That becomes during puberty the vagina becomes resistant now. ठीक है?
यूट्रस का साइज हमने कल ही पढ़ा है, जो प्री प्यूबर्टल होता है वो सर्विक्स इज डबल देन यूट्रस, इट इज 2:1, बाद में 1:2 हो जाता है, यूट्रस डबल हो जाता है एट प्यूबर्टी, और बाद में व्हेन शी डिलीवर्स, व्हेन शी स्टार्ट्स हैविंग चिल्ड्रन, तो 3:1, 4:1 भी हो जाता है, ठीक है। ओवरीज में इलोंगेटेड शेप हो जाता है, इट चेंजेस टू ओवल एंड बल्की, सो बेसिकली जो ओवरी का शेप है वो ऐसा होता है, इट बिकम्स लाइक सरेटेड मार्जिन्स होती है, इट बिकम्स ओवल एंड बल्की। स्ट्रोमल सेल्स प्रोलिफरेट करते हैं क्योंकि इनको बनाना है ग्रैन्युलोसा सेल्स। प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स डेवलप इनटू द ग्राफिन फॉलिकल्स, ठीक है। स्ट्रोमल सेल्स में बनते हैं थीका सेल्स, थीका इंटरनल, थीका एक्सटर्नल। नाउ what diagram is this? It is just an abnormal puberty. We'll be discussing this in the evening. हम इसको evening में देखेंगे और समझेंगे कि precocious puberty और delayed puberty के क्या क्या causes होते हैं और कैसे इन बच्चों को investigate करना होता है, ठीक है। Obviously अगर ये बच्ची जो है अगर 8 साल से पहले इसकी secondary sexual characteristics develop हो रहे हैं और 10 साल से पहले इसको मिनार के आ गए यानी कि periods आ गए, so that means it is अभी actually 9 साल हो गए, it is more of 9 years से पहले अगर मिनार के आ गया तो that is प्रीकोशियस प्यूबर्टी। और प्रीकोशियस लड़कियों में ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू मेल्स, बॉयज़ में डिलेड प्यूबर्टी ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। नाउ इट मे बी आइजोसेक्सुअल, आइजोसेक्सुअल यानी कि सारे डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द सीरीज हो रहा है, पहले थैलार के आ रहा है, फिर प्यूबार के, एड्रिनार के आ रहा है, उसके बाद मिनार के आ रहा है। अगर आइजोसेक्सुअल नहीं होगा तो कोई चीज़ पहले आ जाएगी, प्यूबिक हेयर पहले आ गया है, जैसे फॉर एग्जांपल एंड्रोजन ज़्यादा था तो प्यूबिक हेयर, एड्रिनल हेयर, ये एक्सिलरी हेयर ज़्यादा आ गया और मिनार के बाद में आया, और ब्रेस्ट डेवलपमेंट जो कि ईस्ट्रोजन के वजह से होता है वो बाद में आया, सो दैट इज नॉट आइजोसेक्सुअल, ठीक है, दैट इज हेटेरोसेक्सुअल। Alright, so depends upon कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, it can be heterosexual or it can be isosexual depending upon the cause. Now, McCune-Albright syndrome. McCune-Albright syndrome you should be knowing ये क्या होता है McCune-Albright syndrome. McCune-Albright syndrome में it is a 5% incidence syndrome और इसमें कैफे ऑले स्पॉट्स होती हैं, इसमें जो ग्रैन्युलोसा सेल्स से खूब ज़्यादा ईस्ट्रोजन सिक्रीट होता है तो इसकी वजह से प्रीकोशियस प्यूबर्टी हो जाती है, जो फॉलिकुलर सिस्ट बन रही है अंदर उसके अंदर से खूब सारा ईस्ट्रोजन आता है, ठीक है। अर्ली एक्सेसिव ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन फ्रॉम ओवरी, तो बहुत जल्दी ओवरी प्रोड्यूस करने लगी ईस्ट्रोजन, इसमें FSH और LH लो रहेगा क्योंकि ईस्ट्रोजन बहुत हाई है। मल्टीपल बोन सिस्टिक लीजन्स, आपको ये पता होना चाहिए मैक्यून-एल्ब्रेट में क्या क्या होता है। प्रीकोशियस प्यूबर्टी तो है ही, मल्टीपल बोन सिस्टिक लीजन्स यानी कि पॉलीऑस्टोटिक फाइब्रस डिस्प्लेजिया होता है, साथ में बाकी एंडोक्रिनोपैथीज भी होती हैं, बाकी हार्मोन्स भी गड़बड़ होते हैं। कैफे ऑले स्पॉट्स, दिस इज अ टिपिकल कैफे ऑले स्पॉट्स ऑन द सेम साइड, जिस साइड की ओवरी ज़्यादा गड़बड़ कर रही है उसी साइड इनके ये स्पॉट्स बनते हैं, प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इफेक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन कम्स अर्लियर, अब इसमें इट इज नॉट आइजोसेक्सुअल, इट इज हेटेरोसेक्सुअल, पहले मिनार के हो गया, बाद में थैलार के और एड्रिनार के आया। नॉर्मल हाइट होती है, फर्टिलिटी भी नॉर्मल होती है, ठीक है। सो दैट्स वेरी रेयर, इट इज जस्ट 5%। नॉर्मल फर्टिलिटी बच्चों याद रखो क्योंकि ये आपको कभी कभी MCQ में पूछ लेंगे, हाइट भी नॉर्मल होती है, हाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज नॉट लाइक टर्नर्स जिनकी हाइट कम होती है, ठीक है। दिस मे बी एसोसिएटेड विद हाइपरथायरॉयडिज्म, मैंने बताया ना अदर एंडोक्रिनोपैथीज होती है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म एंड एक्रोमेगैली, ग्रोथ हार्मोन भी अगर बढ़ गया ड्यूरिंग डेवलपमेंट तो एक्रोमेगैली हो सकती है, ठीक है। 6 मंथली इवैल्यूएशंस आर रिक्वायर्ड इन दिस केस। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस, लेट मी सी आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। राइट, ओके। प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, मैं एक्चुअली लाइव चैट देख रही हूँ, लाइव चैट अगर खुल जाए तो एटलीस्ट आई कैन सी योर आंसर, समहाउ आई एम नॉट एबल टू सी द लाइव चैट, लेट मी जस्ट गो टू द चैनल। तब तक आप आंसर करो बच्चों, आंसर करिए आप और मैं आपके आंसर्स देखती हूँ, लेट मी जस्ट चेक। यस, ओके, सो नाउ आई कैन सी 8 people are watching, I am on the right channel now. The screen is blurred. Napoleon, good morning chief, I am from Nigeria, not understanding the Indian language. I'm sorry Napoleon, we are teaching mainly the Indian students because I have chosen English, that is Hindi plus English. Okay, now Syed Ali, good morning. Ravi, good morning. Precocious puberty may be seen in all of these conditions except, tell me precocious puberty किस condition में नहीं होगा? Let me have your answers, then I will quickly tell you what is the answer. Tell me. कैन यू टेल मी व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? कल हमारा 1 घंटे का सेशन रहेगा, कल मैं मॉर्निंग में 10 बजे स्टार्ट करने वाली हूँ बच्चों, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू आस्क यू MCQs एंड MCQs, नो थ्योरी, ठीक है, बिकॉज आई हैव लोड्स ऑफ MCQs ऑन हार्मोन्स एंड लेट मी चेक योर नॉलेज सो दैट हम इवनिंग में फिर बाद में इसकी क्लास लेंगे, ठीक है, स्पेशल क्लास।
Okay guys, no answer? Can you tell me the answer? Come on, I'm waiting for the answer. C. No. Syed Ali. Okay. Napoleon. No. The answer is, it is hyperthyroidism. Okay. Hyperthyroidism. Let me just mark it, because hyperthyroidism is generally not associated with precocious puberty. It is hypothyroidism. Hypothyroidism में क्या होता है? When you have high TSH, the TSH is high. Let me just try and write. In hypothyroidism, the high TSH, in cases of hypothyroidism, in a case of hypothyroid patient, the TSH will be high. This will basically stimulate the FSH, okay, and this will lead to precocious puberty. So hyperthyroidism does not cause that. I'm sorry for the handwriting, guys, because I'm not very used to writing with this pen. So hyperthyroidism does not cause precocious puberty. Hypo causes it. Granulosa cell tumor will cause precocious puberty. Head injury can lead to some problems within the brain. Injury can lead to some. We will discuss this in the evening in the special class. Precocious puberty can be because of injury to the hypothalamus, and corticosteroid intake can cause precocious puberty, because that is a steroid. So depending upon what steroid she has taken. Okay. Next. Okay, everybody wrote C. So answer is not C, it is D. Okay. Precocious puberty associated with bony dysplasia and cafe au lait spots. I just told you the answer. Can you tell me now? If you have heard my lecture, you will understand that what is the answer. And these syndromes you have to search. What is Frolic syndrome? What is Alport syndrome? What is Lawrence-Moon-Beadle syndrome? You should know about them so that you don't get confused. Tell me the answer, guys. Precocious puberty associated with bony dysplasia and cafe au lait spots. Okay, any answers? Any answers, guys? Is it stuck up? No, it's not stuck up. It's still working. Syed Ali. No, Syed Ali, you did not listen to my answer. Yes, you are right. Napoleon, you are right. So it is McCune Albright. See, cafe au lait spots. This is pathognomonic and bony dysplasia. These are very, very important features of McCune Albright syndrome, which I just told you. Okay. An infant is found to have clitoral enlargement and some degree of labial fusion. So she is basically undergoing virilization. What is the first step in arriving at a diagnosis? Now, we don't know whether it's a he or a she. Okay, let me have the answer. Even if you're answering wrong, it's okay. You don't have to retract. You don't have to remove your message. It's fine. That is the reason why we are here, to explain the subject and make you answer rightly. Even if you're wrong, it's fine. Come on. Muzaffar, official D. Okay, any other answer? Let me have more answers, guys. Anybody else? Napoleon, Syed Ali. Okay, I will go with Napoleon's answer. That is right. Good, Napoleon, you're doing well. So that's to perform a karyotype. Okay, where is my pen? That's my pen here. So perform a karyotype, because we don't know whether the infant is a male or a female. They are telling you clitoral enlargement. Clitoral enlargement means it can be a small penis also, an ill-developed male external genitalia, or it can be a female who has undergone virilization. So first to make out whether it's a male or a female. Right? It can be a male with XY. It may be a male who has AMH deficiency or AFS. That is the most common cause of male hermaphrodites. That is testicular feminization syndrome, where the androgen insensitivity is there. So it can be XX or XY. So the first answer is perform a karyotype and check what it is. Okay. Now let's get to the next question. An infant is found to have clitoral enlargement and some degree of labial fusion. Same question continuing. Karyotype, now you know, you've done the karyotype, it is XX. Now what is the next step in arriving at a diagnosis? Now you know it's a female.
आपको पता है ये फीमेल है एंड शी इज अंडरगोइंग विरिलाइजेशन. नाउ व्हाट विल यू डू? व्हाट विल यू चेक फॉर? Anybody? Okay, no one has answered this one. Napoleon, Sayyid Ali, Muzaffar, Gaurav, Sahil. Okay, Napoleon, you are saying B, Sayyid Ali is B. Anybody else? What will you see in an ultrasound? All are answering B. What will you see in an ultrasound, bachcho? What will you actually see? What do you want to see in an ultrasound? Okay, I'll give you the answer. Now you know that this infant has been virilized. Okay, she is born with a virilized external genitalia. It's an ambiguous genitalia, which obviously is happening in a female. Okay, so if a female is getting ambiguous genitalia, that is generally always because of excessive androgen exposure within the body. Now, where did that hormone come from? Maybe she herself has an adrenal tumor, or she was exposed to the maternal excessive androgen intake. So first thing you need to check is, where did this androgen come from? Now that she's born, what will you do? You will check her 17 hydroxyprogesterone levels, because that is the entire cycle which happens in the adrenals. If that is raised, that means there is some problem in that pathway. That is the reason why she's getting more of androgen exposure, and she underwent virilization. Okay, so you should know that table, that particular cycle, how the hormones are formed, the corticosteroids, the mineralocorticosteroids, and the androgens. Okay, so it is D. Next, in testicular feminization syndrome, also known as, where is my pen? Let me just check my pen. Okay, it is also known as, okay, I'm just going way above. Okay, what buccal smear is chromatin positive, normal breast size is observed, menstruation is scanty and infrequent, streak gonads are seen. So first of all, you have to recapitulate what happens in testicular feminization syndrome. Okay, so what happens? Tell me. In testicular feminization syndrome, what happens? It is AIS. That is androgen insensitivity syndrome. So in androgen insensitivity syndrome, there will be good androgen inside, there will be good testosterone inside, there will be a testes because they are testicular feminization syndrome, but this androgen is not acting on the external genitalia and not acting on the internal genitalia because the receptors are insensitive. So now tell me what will happen. Napoleon, are you answering this question? Okay, Sayyid Ali, you said A. Napoleon, you said D. Anybody else? Napoleon, you have removed your answer. Muzaffar, it is B. Okay. So these ladies, they are actually males. They are XY. I'm giving you a hint. They are XY, but they do not have the androgen receptor. So the androgen is not acting. So what will happen? They look like lady. The external appearance is of a lady. Okay, that's the hint. Yes, that's the answer. Napoleon and Muzaffar, you answered it right. Muzaffar, you were the first one to answer. That's very nice. So they have normal breast development. Where is my cursor? Now this is something I can't see most of the times. Buccal smear cannot be chromatin positive because they are XY. They only have one X chromosome. So buccal smear, that is a bar body, will show 0 bar bodies. Okay, so 2X will make it X minus 1 bar body, but 1X will be 0. Okay, normal breast development because by default their androgen is not acting, so obviously the external genitalia will be like a female, and they have enough testosterone which gets aromatized peripherally in the fat and gets converted to estrogen, so that estrogen develops the breasts. Okay, so androgen which is needed, the DHT, dihydrotestosterone, that is not active, so external genitalia does not grow, pubic hair does not come because they do not have the androgen, but testosterone is there. Menstruation is scanty. No, there is no menstruation. There is no uterus at all. Streak gonads, no, they have good testes.
testes are there. That is why the Sertoli cells have secreted AMH. So there is no internal genitalia. Because of AMH, no Mullerian duct development, and because the testosterone is not able to get converted into androgen, or even if it is getting converted, it is not acting. So that is why the Wolffian duct also does not develop. So no internal genitalia, good external female genitalia. Okay. Now, all are true except for Klinefelter syndrome. What is Klinefelter syndrome? Do you remember? Let me just write it for you. So I need to search my pen again. Okay, so it is XXY. Okay, that is Klinefelter syndrome. Most common chromosomal cause of male infertility, associated with gynecomastia, associated with increased risk of breast cancer, associated with short lifespan. So what is not true? Tell me. What is not true? Except. That is true. Everyone is answering D. That's fine. Yes, they will not have a short lifespan. They will have a normal lifespan. The most common chromosomal cause of male infertility, chromosomal cause. Otherwise, male infertility can be because of any reason. There are many reasons depending upon the region they are coming from. Like if it's a very hot country then or a hot region, then that will be a different story. But chromosomal cause male infertility most common is XXY, associated with gynecomastia, yes, and that can lead to breast cancer. But they do not have a short lifespan. Normal size but non-functioning uterus is usually associated with, now it's a normal size uterus but it's non-functioning. So what can it be? Can it be stenosis of the external os? Can it be uterine synechiae? Can it be partial agenesis of the vaginal wall or vagina, or complete absence of the vagina? Tell me. What is the most likely answer? Muzaffar, have you answered this one? Have you answered this question? A. Stenosis of the external os, or was it the previous one? It is difficult to actually conduct MCQs on YouTube because I don't exactly come to know. There is a lag in my mobile and the actual what I'm talking. So maybe I would number the questions. Tomorrow when I take the MCQ session, I will number them. So you can write the number of the question and then write the answer. Like if it is 1 or a question, then 1A or 1D, right? That will be easy. Karthik, you are saying uterine synechiae. Viji, you are saying uterine. Ravi Kumar synechiae. Okay. Anybody else? Okay, that is the right answer actually. That is the right answer because stenosis of the external os will not basically make the uterus non-functioning. It will still function. Stenosis will just cause accumulation of blood inside the uterus. Partial agenesis and complete absence is not going to, first of all, there may not be any uterus. There may be a streak uterus, right? And it is not going to affect the function because as such the uterus may not be there. Now, exposure of a female fetus to androgen in early embryogenesis may arrest the differentiation of. Now, this is very much like what we just read. Okay, अभी हमने MCQ करा है. Napoleon, yes. Okay, you have done with that. We are done with that question. Now, this question: exposure of a female fetus to androgens in early embryogenesis at the time she is developing may arrest the differentiation of what? Okay, Ravi, you are saying A. Karthik A. Muzaffar A. Just read the question properly. It is not saying that there is some problem with the AMH. There is nothing like AMH deficiency here. Okay, or to do something to do with estrogen, or I mean, you are getting confused, okay? All of you are getting confused. It is androgen exposure in early embryogenesis, not at the time when she has already been differentiated into male or female. So, early embryogenesis. It is just a twisted question. What is it going to do? Tell me. It's not A, bacho. Even if she gets a lot of androgen exposure, the Mullerian duct will still develop. She will still have the inner Mullerian duct because the AMH is not there. The Sertoli cells are not there. Testis is not there. It's a female fetus. Okay. So in a female fetus, because of the not presence of testes, there will be no AMH and the Mullerian duct will develop. Androgens will affect what?
excessive androgen we just read is going to cause external genitalia ambiguity. That means her external genitalia, which is under the effect, which should not have penile changes or which should not have the scrotum fusion, they will undergo fusion. So it is urogenital sinus which is going to not differentiate properly. Okay, in a female we know that because there is no AMH, so the internal genitalia is uterus, Mullerian ducts develop, and because of absence of the DHT, the testosterone, and that factor, so the external genitalia, the urogenital sinus develops into vagina. But now because excessive androgens have been given, so the external genitalia will develop like a male. Okay, so that is what is happening when it is in a early embryogenesis part. Scoring system for virilization in females. Tell me. You should know this. These names are very important. What is the scoring system? Who gave it? And tell me. Very good. Napoleon, you've answered it. It's Prader. Okay. Prader is the scoring system for virilization. Ferryman-Galway, some people might say Ferryman-Galway, but that is only for hirsutism, only the kind of hair distribution she is having on her back, on her chin, on her chest, or whatever. Okay. Prader takes into account everything, entire body which is getting virilized. Main gene induced in 24-hydroxylase deficiency, CAH. I think that is no one more is there. Okay. Main gene induced in the 24-hydroxylase deficiency. This is just if you remember the cycle, if you remember the table, how they are forming hormones in the adrenal gland, you will come to know the answer. Okay, anybody? Anybody? Tell me the answer, guys, so that we can quickly finish the session. I have to go to my hospital also. My patients are waiting. Okay. Vijiraj, it's A, and that is the right answer. Okay. It is CYP21A2. You just have to learn this. Fate of Mullerian duct is determined by. What determines the fate of Mullerian duct? Yes, Napoleon, it is A. That's right. Okay. Fate of Mullerian duct is determined by which chromosome? Which chromosome decides the sex of a fetus, a growing fetus? Be quick, guys. Yes, so we have the answer. Karthik, you're right. So that is B, because the Y chromosome has a short arm which has a SRY gene which codes for the TDF factors and the other factors which decide whether it will be a Mullerian duct or whether it will be testes or ovary. Okay. Gonads are bipotential till, if you have heard my lecture before, then you will come to know. Gonads are bipotential till which age? So I'm just quickly going to finish this, guys. Okay, one answer, I'm going to finish it. Karthik, yes, it is the end of 6 weeks. Very good. So by the end of 6 weeks, the gonads are still bipotential. After that, this SRY gene, if it is present, it will code for the TDF and then testes will develop. Okay. Otherwise, it will be ovary. Fate of the Mullerian duct. We have done that now. Delayed puberty is defined if menstruation does not occur by. Now that's a tricky question. Tell me. Napoleon, you're right. It's 6 weeks. Yes. Tomorrow I'm going to number the questions. So 1, 2, 3, 4. So you can just write 1A, 1D or 2B. So that will be easy for me. Okay. So that whatever lag I'm facing in the YouTube, that will not be there. Delayed puberty is defined if menstruation does not occur by. Tell me, guys. You can just write the age. It's a tricky question actually, because they have not mentioned about the secondary sexual characteristics. Okay, how many more questions do we have? I think we need to finish this. We'll do rest of the questions on my special class today in the evening. So let's finish it here, guys, because running short of time. Vijay Raj 16.
Karthik, D, Napoleon 14 or 16. So it is 16 here, guys. Because why 16? Because they have not mentioned secondary sexual characteristics. So normally, if there are no secondary sexual characteristics, it should be 14. Okay, but if she's developing secondary sexual characteristics, we can wait till 16, maybe a delayed, physiologically delayed puberty. Okay, guys, so that's it. I am going to finish the session now because we have a couple more questions, but I am running short of time, and we will do these in the evening. Attend my special class on Unacademy. Download the app on your mobile Play Store, Unacademy Learners app, right? And then you use my code DRSONALL. Let me just show you my code again. So that's Dr. Sonal code. There you go. So that's my code here, Dr. Sonal. And if you use this, you can easily access my live classes, my free classes. And if you are subscribing, then this code will help you to get 10% discount. And I'm sorry if you want the lecture to be in English. What I will do is whenever I teach you, I'm going to talk in English as well as Hindi. So at least you can grasp 80% of what I'm talking. Okay. So bye bye guys. All the best. Study well. I'm always there to help you. And I have a Telegram channel. I'm going to post that very soon. Okay. Bye bye. Take care. You can search me on